Good evening everyone. Welcome to Sai Himanshu classes. Today we are going to discuss some important questions for second year board exam. First we will discuss about unit 2 and unit 3. In this video we are including some short questions 2 and 3 marks and also it's including long questions. So now our first question is unit 2 mixed syllogism and fallacy of illicit measure is the most important question in unit 2, right? Fallacy of illicit measure मतलब आमर मिक्स्ड सिलोजिम में जेमिति फालासी ऑफ इलिसिट मेजर गोटे जिंस अछि फालासी अछि आपण जानथिबे फालासी बहु प्रकार रो अछि एंड फालासी ऑफ इलिसिट मेजर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन यूनिट 2 and according to general syllogistic rule आपण जानथिबे general syllogistic rule 10टा अछि special syllogistic rule मध्ये 10टा अछि से general syllogistic rule रो 4 नंबर rule रे now the term can distributed in the conclusion unless it is distributed in the premises, but if the major term is distributed in the conclusion without being distributed in major premise, we commit the fallacy of illicit measure. For example, all cows are quadrupeds, no dogs are cows, no dogs are quadrupeds. तो first तम मानन को जानिबार अछि कि रूल नंबर 4 कोन. रूल नंबर 4 रे हमर illicit measure premise को इंक्लूड करा है जहाँ द्वारा कि हमें जानी परिया फालासी ऑफ इलिसिट मेजर कौन. ए जो आर्गुमेंट हमर दिया गला जो एग्जांपल टा म आपन मान को देली ऑल काउज आर क्वाड्रुपेड्स, नो डॉग्स आर काउज, नो डॉग्स आर क्वाड्रुपेड्स. मेजर टर्म प्रोडक्ट काउ प्रोडक्ट क्वाड्रुपेड्स मिडिल टर्म प्रोडक्ट हम केमी प्रोडक्ट ना डॉग्स proposition এটা হলো a proposition. এইটা কোন প্রকারৰ proposition? e proposition रो proposition हमर दी प्रकार जोटा थिला कि universal proposition गोटे आ गोटे हला particular proposition, right? এটা हला universal positive, এটা हला universal negative. All cows are quadrupeds, no dogs are cows. এটা हला universal negative proposition. No dogs are quadrupeds. That is the conclusion. These arguments involve the fallacy of illicit measure because the measure term quadruped has been distributed in the conclusion without being distributed in the major premise. See कौन कहला नहीं ये argument रे fallacy of illicit measure टा include है जी कारण the measure term quadruped ए जो measure term टा हमर रहिला quadruped बोली जेटा कौन है ना quadruped has been distributed in the conclusion. In conclusion ने distribute हैला quadruped टा conclusion में distribute हैला ना नहीं तो जोड़ा distribute हैला without the distributed of major premise रे distributed न है कि सेटा किंतु हमर conclusion ने distribute है अछि. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हमर रहला fallacy of illicit minor. illicit major illicit minor दी प्रकार रो premise हम पाखे अछि. fallacy एटा कोन fallacy of illicit minor कोन according to syllogistic rule number 4, right? हमको प्रथमे रूल नंबर 4 को ही मन रखिबा पड़िबो. जो 10टा रूल अछि आपन 10टा जगह रूल मन रखिबा पड़िबो. प्रथमे सेथुरु स्पेशल सिलोजिस्टिक जनरल सिलोजिस्टिक रूल नंबर 4 को पुणी आमे जिबा. नो टर्म कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस. जो पर्यंत गो टर्म प्रेमिस रे डिस्ट्रीब्यूट हेनी से पर्यंत तक सेटा कंक्लूजन रे डिस्ट्रीब्यूट हे परबो नै. बट किंतु if the minor be distributed in the conclusion without being distributed the minor premise, जदि एटा कंक्लूजन ने डिस्ट्रीब्यूट बट इफ द माइनर प्रेमिस टा कोन हैला बी डिस्ट्रीब्यूटेड जदि डिस्ट्रीब्यूट हेछि कंक्लूजन ने विदाउट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड द माइनर प्रेमिस माइनर टा डिस्ट्रीब्यूट हेछि विदाउट माइनर प्रेमिस रे वी कैन नॉट बी द fallacy of illicit minor. we comment the fallacy of illicit minor. आमे ताकू illicit minor बोली कहि परिया. जेंति एथि गोटे एग्जांपल देली मु आपण मानको all men are mortal, all men are rational, right? All rational beings are mortal. से कौन कहला सब मनुष्य हेले मरणशील, all men are rational. सब मनुष्य हेले सामाजिक rational animal. men मनुष्य माने हेले सामाजिक प्राणी आ सब मनुष्य माने हेले मरणशील. से कौन कहला all rational beings are mortal.
जेतिक आमर सामाजिक प्राणी अछंती समस्त हेले मोर्टल दिस आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स द fallacy of illicit minor ए आर्गुमेंट रे हमें fallacy of illicit minor को इन्वॉल्व करछे बिकॉज़ द माइनर टर्म रैशनल एतरे जो टर्म टा माइनर टर्म रहला रैशनल टा हमर को टर्म ना माइनर टर्म has been distributed in the conclusion without being distributed in the minor premise eta distribute heichi conclusion ne without being distributed in the minor premise बिना eta distribute heichi तो जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हला fallacy of undistributed middle टर्म जोटे अनडिस्ट्रीब्यूट heichi fallacy जाना पड़ला ताको हमें कोन कहितो ना undistributed middle से कोन कहला ना according to general syllogistic rule number 3 right general syllogistic rule number 3 कौन ना the middle term must be distributed at least once in the premises से कहला कि गोटिए थरो पई हो पछे middle term टा distribute हेते premise रे जहां भी हे जाओ in it means middle term must be distributed either major premise or minor premise and even both of the premises major premise रे distribute हेतिबो नाले minor premise रे distribute हेतो सी कोन कहला फर्स्ट से कहला middle term must be distributed at least once in the premises गोटे premise रे distribute हेतिबो जहां भी हेतले सेकंड रे से कहला either major premise रे distribute हेतिबो or minor premise रे distribute हेतिबो and even both रे भी distribute हे परिबो but in the middle term be not distributed even once in the premises जदि middle term टा गोटिए थरो भी distribute हेइनी premise रे which commit the fallacy of undistributed middle जहा को हमें कहिथौ कि undistributed middle कारण general syllogistic rule कहूची middle term टा general syllogistic rule number 3 कहूची middle term टा at least गोटे थरो premise रे distribute हबो जदि से distribute हेइनी premise रे ताहाले हमें ताको middle term undistributed middle of fallacy बोली भी कहि पैला हमरो देखिला मु एठी आपण मानु गोटे एग्जांपल देछि ऑल मेन आर मोर्टल ऑल एनिमल आर मोर्टल ऑल एनिमल्स आर मेन सब मनुष्य हेले मरणशील सब एनिमल गुडा हेले मोर्टल सब एनिमल भी मोर्टल ऑन एनिमल्स आर मेन ताले सब एनिमल माने पशु राइट स्टेट एरिस्टोटल्स डिक्टम अ डोमिनेंट नॉल राइट Aristotle को डिक्टम टा आपण मन को पढिबा पडिबो Aristotle डिक्टम हम रहूची यूनिट 3 रे सॉरी यूनिट 4 रे अकॉर्डिंग टू Aristotle डिओमिनो नॉट नॉल तांकर गोटे रूल थिला राइट लिटरली जार अर्थ हला लिटरली बा स्टेटमेंट कंसर्निंग ऑल एंड नॉन गोटे स्टेटमेंट जोटा कंसर्न करे सब को किबा किछि में जाको whatever is predicted whether affirmatively or negatively of a term distributed may be predicate in like manner of everything contained under it according to whatever is true a class taken distributively is true of every member of the class and what is not true of classes taken distributively is not true of any member of the class Mill stated like this. Mill किए Mill हेले जने logician जी की state कले माने गोटे एग्जांपल देले all man are mortal Ram is a man Ram is mortal से कहले कि सब मनुष्य हेले मरणशील राम मनुष्य गोटे राम मध्ये गोटे मनुष्य राम भी मरणशील no man are perfect John is man John is not perfect right से कहले कि सेकंड रूल ले तांकर से कोन कहले ना नो मैन आर परफेक्ट के कोनोसी मनुष्य भी परफेक्ट में जॉन इज अ मैन जॉन गोटे मैन जॉन इज नॉट परफेक्ट राइट जॉन हेले परफेक्ट में हमको तो एते वर्तमान आपण मानक पाकर एते टाइम नहीं तेन करी आपण माने मेनली फोकस करिवे आपण मानकर एग्जांपल ऊपर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन fallacy of ambiguous minor right when minor term become ambiguous in minor premise conclusion is called fallacy of ambiguous minor ambiguous means कोन जोटा बहुत जिंस थाए माने कंफ्यूजिंग माने तार बहुत मीनिंग थिबो गोटे जिंस रो बहुत गुणे मीनिंग थिबो ताको ambiguous बोली पाछे when minor term become ambiguous minor term जेतो ambiguous in the minor premise and conclusion is called fallacy of ambiguous minor आको हम fallacy of ambiguous minor बोली कहथो when गोटे देखंतु गोटे छोटो एग्जांपल when मरो कोन मु आपण मन गोटे एग्जांपल दोजी no man is made of paper right all pages are man no pages are made of paper right
एटा को प्रकार रो प्रपोजिशन एटा हमर हला ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन एटा को प्रकार रो प्रपोजिशन एटा हला ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन एटा को प्रकार रो प्रपोजिशन एटा हला ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन ए आउ ई राइट ए आउ ई प्रपोजिशन में कोन आसे ओ प्रपोजिशन ई प्रपोजिशन एटी हमर कोन आसला ई प्रपोजिशन right. This is involved the fallacy of ambiguous minor because the word page which appears to be the minor term is used in the minor premise to mean boy servant while in the conclusion it means page the book or copies right. Next question amar hela long question आपण मानू लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित पढ़िया पड़ो ता पूर्व आपण मानू गोटे कथा कहबी आमे लॉन्ग क्वेश्चन जेतले पढ़िबा आमे लॉन्ग क्वेश्चन भितरु मे बी दुईटा कि तीनटा शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाई पारे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन देखंतु आपण मानू दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन मिल जो केमिति ना से कोन पछेछि ना व्हाट इज एरिस्टोटल्स डिक्टम एक्सप्लेन हाउ इज इट डायरेक्टली अप्लाइड टू द वैलिड मोड्स ऑफ फर्स्ट फिगर राइट से सपोज से हमको पचारछि हम शॉर्ट क्वेश्चन आदर भी गोटे मिल जाई पारे कोन ना व्हाट इज एरिस्टोटल्स डिक्टम एंड सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाई पारे एक्सप्लेन मतलब से जदी पचारिछि व्हाट इज द सपोज हे पचारिथियो कि एक्सप्लेन हाउ डायरेक्टली अप्लाई टू द वैलिड मोड्स ऑफ फर्स्ट फिगर राइट हमको दुईटा क्वेश्चन आदर मिल जिवो जन करी हम प्रथमे कोन करबा हम प्रथमे पढिबा आपण मानन मु तो मोटी पूरा डिस्क्राइब करछि आपण माने आराम से को पढी परिबे एरिस्टोटल फादर ऑफ डिडक्टिव एरिस्टोटल द फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक एरिस्टोटल होचन फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक फॉर्मुलेटेड ए रूल इन अंडर द टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट सी कोन करथले सी गोटे रूल तयारी करथले वैलिड रूल सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट दिस रूल्स इज नोन एज डिक्टम डी ओमिनो एट नॉल व्हिच मींस स्टेटमेंट कंसर्निंग ऑल एंड नॉन गोटे स्टेटमेंट कौन करे कंसर्न करे सब जिंस को नली किछि नै दिस सेज दैट व्हाटएवर इज प्रेडिक्टेड वेदर अफर्मेटिवली और नेगेटिवली ऑफ द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मे बी प्रेडिक्टेड इन लाइक मैनर ऑफ एवरीथिंग कंटेन्ड अंडर इट राइट तापर हमें जिबा मील केमती कोन एक्सप्लेन करले हमें एटी देखले एरिस्टोटल को डिक्टम रे से कहले वैलिड मोड्स राइट फर्स्ट फिगर रो वैलिड मोड्स देखिया मील को एक्सप्लेनेशन देखिया मील केमती एक्सप्लेन करले मील एक्सप्लेन द डिक्टम ऑफ फॉलो where whatever can be affirmed or denied of a class may be affirmed or denied of everything including the class तापर से गोटे एग्जांपल देले all men are mortal ram is a man ram is mortal right hence the morality एटी कोन हला मेन थिंग हला moral right से कोनटी कहले ना hence the morality is affirmed of the whole class man and ram being the member of the class man is mortal right से आ गोटे एग्जांपल कोन देले ना नो मैन आर परफेक्ट विजय बाबू इज अ मैन विजय बाबू इज नॉट परफेक्ट राइट एटा आ गोटे एग्जांपल इन दिस केस परफेक्ट इज डिनाइड टू द होल क्लास मैन एंड विजय बाबू बीइंग द मेंबर ऑफ द क्लास राइट man must come under this preview that is Vijay Babu is not perfect according to Watley किए ना आउ जने फिलोसोफर आउ जने लॉजिशियंस राइट से कौन कहले ना दिस डिक्टम मींस व्हाटएवर इज प्रेडिक्टेड whether affirmatively or negatively जो गोटे जिंस प्रेडिक्ट हुए आइदर सेटा पॉजिटिव वे रहिते नॉले नेगेटिव वे रहिते of a term distributed may be predicted in like manner of everything contained on it right this view is accepted by Gibbons or Keynes also let us try to understand the significance of the dictum of the syllogism the dictum can be divided into three parts mainly आपण मानको मने रखिया को पड़िबो आपण मानको क्वेश्चन रे दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कोन ना जो डिक्टम ता अछि डिक्टम ता तीन भाग रे दिबाई छि कोन से प्रथम ना एनीथिंग व्हाटएवर इज प्रेडिक्टेड ऑफ ए टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेकंड वन इज अंडर व्हिच टर्म समथिंग एल्स इज कंटेंडेड मे बी प्रेडिक्टेड ऑफ that which is contended of these three the first one is the major premise all or no the first one is the major premise all or no right all or no कौन एटा यूनिवर्सल नेचर यूनिवर्सल अफर्मेटिव यूनिवर्सल नेगेटिव एटा कौन यूनिवर्सल मेजर प्रेमिस रे रहउची all or no m is p all m is p हे परिबो no m is p हे परिबो the second one is minor premise कौन ना सम आसीबो s is m
and the third one is the conclusion, S is P, right? हमको फिगर टा मन रखिया पड़ियो प्रथम फर्स्ट फिगर हमर फिगर केतरा अछि ना चारिटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारिटा फिगर रे हमर रहिला 19 वैलिड मोड्स आउ हमर रहिला 256 moods 256 रो हमर रहिला 19 वैलिड मोड्स dictum can be illustrated as follows एट सब हमर एग्जांपल दिया गला दुईटा all M is P, all S is M, S is P, right? All cows are quadruped. Shamalin is a cow. Shamalin is quadruped, right? No M is P, S is M, and S is not P. No politicians are honest. Rajesh is a politician. Rajesh is not honest. In the example of amor eti ei duita jinso re amor example duita discussion kara gala and I mean jiba next कौन ना what is dilemma, right? And now the another important question is what is dilemma. आपण dilemma पढ़ी fallacy रे third fourth unit रे हमरो propositional logic रे explain its different forms structure of dilemma first आपण देखिए देखंतु हमको इतरु मु जेमति कहिली कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रो हमको दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन मिलियो सपोज आपण 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन टा पढिबे आपण को दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन मिलियो शॉर्ट क्वेश्चन कोन ना व्हाट इज डिलेमा एंड सपोज पढि कि व्हाट इज डिलेमा मे बी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढि पारे एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स मे बी पढि थिबो एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिलेमा राइट जदि आपण पढिले व्हाट इज डिलेमा ना a dilemma is mixed syllogism and in which the major premise is compound hypothetical proposition, the minor premise is disjunctive proposition. हमर proposition जो अछि से कहले कि major premise टा hypothetical proposition है, minor premise टा disjunctive proposition है and the conclusion is either categorical or disjunctive. conclusion टा कोन होवे ना either categorical हुए ना disjunctive हुए. let us analyze the three constituent proposition of a dilemma, right? But amara tinta constituent kon rahila proposition dilemma ro na ei tinta the kon na the first the major premise is a compound hypothetical proposition that is to say consist of two hypothetical propositions joined together, right? Then second one is the minor premise is disjunctive proposition, right? Third one is the conclusion may be categorical or disjunctive and forms of dilemma जेमति मु कहिथिली आपण मान को दुईटा क्वेश्चन आसीबो मे बी फर्स्ट क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज डिलेमा सेकंड क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज द फॉर्म्स ऑफ डिलेमा यदि आपण गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढले तले आपण को दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन मिलियो राइट ए डिलेमा इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टिव if the disjunctive minor premise is alternative forms the antecedent and the antecedent of the compound hypothetical major premise a dilemma on the other hand is called destructive if the minor premise is alternatively denies the consequent of the compound hypothetical major premise thus whether a dilemma is constructive or destructive depends on minor premise, right? Both constructive and destructive dilemmas may be either simple or complex. In a simple dilemma, conclusion is categorical, while in the complex dilemma, conclusion is disjunctive. आमे को एथरु में भी दुईटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पळे आसी पारे मे भी शॉर्ट क्वेश्चन आसीथिबो सिंपल डिलेमा रो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ए सिंपल डिलेमा कैटेगोरिकल और डिसजंक्टिव कौन लिखियो कैटेगोरिकल हमरो कॉम्प्लेक्स डिलेमा में भी आसीबो हम कौन लिखिबा ना डिसजंक्टिव राइट thus whether a dilemma is simple or complex depends upon the conclusion जदि हमें भलो से गोटे क्वेश्चन को पढिबा ताले हमको देखंतु आपण को केते क्वेश्चन आसुची आ भितर thus whether a dilemma is simple or complex से पछरथिबो dilemma is what and what fill in the blank रे पछरथिबो simple or complex simple dilemma is categorical and complex dilemma is disjunctive तापर विभिन्न फॉर्म जो रहला सिंपल कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव सिंपल डिस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्टिव जो दी प्रकार रो डिलेमा हमर रहिला गोटे हला सिंपल गोटे हला कॉम्प्लेक्स सिंपल टा पुनी केते विभक्त सिंपल टा दी भाग रे विभक्त कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पुनी कॉम्प्लेक्स टा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डिलेमा if A is B, C is D, then if E is F, G is H, either C is not D or
G is not H. Conclusion कौन होगा? Neither A is B or not B, or E is not F. If a man is dutiful, he will obey orders, and if he is intelligent, he will understand them. But either he does not obey orders or he does not understand them. Either he is not dutiful or he is not intelligent. This is the example. And second one is fallacy. आमे देखिया fallacy कौन? प्रथम क्वेश्चन हमर गोटे शॉर्ट क्वेश्चन रहिला पुणी यूनिट 4 रो व्हाट इज fallacy, and this is the most important question. But fallacy we mean mistaken or error of confusion. A fallacy arises an argument, and the argument is said to be fallacious if it appears to be conclusive when it is not. A fallacy in an argument may be either formal or informal. पहले सी में भी पचार थियो fallacy अपन केते प्रकार ना दी प्रकार गोटे हला फॉर्मल गोटे हला इनफॉर्मल. शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी जाई पारे. फॉर्मल fallacy कोन? तब फॉर्मल fallacy ता हमरो सेमती अपन को सेकंड क्वेश्चन हला कोन हला फॉर्मल fallacy ना कोन ना आर्गुमेंट जोटी कमिट्स करे फॉर्मल fallacy को when it forms of structure is not accordance with the rules governing deductive logic. जेतबेले deductive logic को govern करे नि रूल गुडा लॉजिक ता सेतबेले सेट हला फॉर्मल fallacy. That is the argument commits the fallacy if it violates some or other rules of inference, right? एटा दी प्रकार रो fallacy कोन ना fallacy of immediate inference, fallacy of mediate inference. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया fallacy of simple conversion a proposition. मु आपन मन केमति कहितली आपन कर चारटा proposition अछि a e i o, राइट? आपन जानिथिबे आपन को चारटा proposition अछि. proposition चारि प्रकार रो universal affirmative, universal affirmative, right? universal negative, right? particular affirmative and particular negative. ताले एटा हमर को प्रकार proposition universal affirmative proposition. तो universal affirmative proposition रहला हमर simple conversion proposition. And next question है fallacy of material aversion. material aversion तो अपन पढ़ितबे किए डेवलप करथिले ना बेन डेवलप करथिले material aversion. बेन is the founder of material aversion. सेमती अपन करो यादर गोटे example देछि knowledge is good, ignorance is bad. Here no rule of aversion is applied, so it is fallacious, right? Fallacy of four terms and fallacy of undistributed. These two questions also very important in your exam, right? You should read it once. Fallacy of amphiboly. Amphiboly कौन ना? This question is also important. This fallacy arises due to ambiguous माने मु आपन को प्रथम रो कहि छी माने जहार बहुत गुडे मीनिंग अछि जोटा बहुत कंफ्यूजिंग गोटे जिंसर डिफरेंट जगह डिफरेंट मीनिंग. तो ambiguous meaning, right? Sentence because its construction, and the amphibolous sentence is one which because of its construction is capable of being interpreted in at least two different ways. So it is not possible to determine which meaning it intends to convey. He example कौन ना? He was given twice 2 and 3 rupees. It may mean that he was given either 7 or 10 rupees. And next question jiba argument of argument ad populum. This is the question. And argument of dictum. This is the most important question. एथरे ଗୋଟେ बढिया example दिया है. The world is false as Shankaracharya said. So non-violence is the best code of life, and it is the truth force of Mahatma Gandhi said so, right? And now the truth table आपण माने जानिथिबे. truth table ले 3-4 प्रकार हमर 5 प्रकार जिंस अछि. गोटे हला constructive and गोटे हला conjunction. हमर हला गोटे हला conjunction, गोटे हला disjunction, गोटे हला implication, गोटे हला equivalence, गोटे हला alternation, right? आपण को ट्रुथ टेबल माने थिबो गोटे होची कॉन्ट्राडिक्शन भी हमर अछि, राइट? से कहले कि फ्लावर इज व्हाइट पी, फ्लावर इज नॉट व्हाइट नॉट पी. नेगेशन चिन्ह हला एडा नॉट पी ओ हमरो पी हला ओ अफर्मेटिव चिन्ह. एंड डिसजंक्टिव फंक्शन एडा गोटे डिसजंक्टिव फंक्शन. देखो राम इज इंटेलिजेंट, राम इज डिलिजेंट, राइट?
एटा है डिसजंक्टिव फंक्शन डिसजंक्टिव फंक्शन ने हमर फॉल्स फॉल्स केतबेले हुए ना जेतबेले दुईटा जाक p and q both are false then the conclusion is false p or q this is the disjunctive function and this is false and otherwise all are true in this function and next one is alternation ने हमें देखिया केतबेले हमर ट्रू होची फंक्शन टा केतबेले फॉल्स होची अल्टरनेटिव फंक्शन ने देखंतु केवल p जो p and q both are true when there is the conclusion is false and p and q both are false the conclusion is false आउ हमर ट्रू केतबेले होची ना जेतबेले दीटा देखो गोटे ट्रू गोटे फॉल्स हिची गोटे फॉल्स गोटे ट्रू हिची सेतबेले कंक्लूजन टा ट्रू होची एंड नेक्स्ट वन इज ट्रूथेबल इम्प्लिकेटिव फंक्शन जेमिति मु आपन को कहितली सेमिति इम्प्लिकेशन ने हमर कोन हुए ना केवल गोटे जगह रे हमर फॉल्स प्रोपोजिशन हुए एडाला जेतबेले p is false and q is false both sorry p is true and q is false then the conclusion p implies q is 0 and otherwise every function was true and next equivalence रे कोन हुए सेमती हमर p is true and q is true then the conclusion is true otherwise this is the false and p is false q is false the conclusion is true tautology हमें केमती जानिया tautology रे कोन हुए ना यदि p and q both are tautology ला फॉर एग्जांपल हम tautology केमती पाइबा tautology यदि हमर कंक्लूजन तिक सबुतिक कंक्लूजन ट्रू हबो ताले से आर्गुमेंट से प्रपोजिशन टाकू आमे tautology बोली कहिबा तो केमती हला सेला p not p 1 0 0 1 आर कंजंक्शन डिसजंक्शन टारे कोन हला ना 1 0 रे 1 हला 0 1 रे भी 1 हला कारण हमें डिसजंक्शन ने जानछि केवल गोटे जगह रे फॉल्स हबो सेटा हला 0 0 रे 0 next contradictory and contradictory is also like tautology and tautology is defined and contradictory is defined contradict केमिति करबा ना गोटे जिनिस जदी पॉजिटिव थिबो आउ नेगेटिव थिबो दीटा जको जिनिस थिले सेटा को सेम टाइम समान दीटा जको जदी अलगा अलगा थिबो ताले सेटा हमर contradict बोली कहबो आउ देन हमें देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन ने मु आपन को कहिची एक्सप्लेन द फॉलोइंग fallacies ऑफ एग्जांपल ए सब fallacy मु आपन को देइची fallacy of post hoc ergo propter hoc right and fallacy of mistaking condition and fallacy of neglecting and negative condition fallacy of mistaking co-effect of cause and effect right and fallacy of mistaking remote condition fallacy of mistaking coexistence fallacy of non causa pro causa fallacy of confusing between cause and effect right fallacy of illicit generalization this is the most important question for you guys and explain the tautology contradictory and contingent proposition राइट एठी आसला हमर से कहले से आपन को एमती गोटे प्रपोजिशन देथिबो जहार आपन कॉन्ट्राडिक्ट की कंटीजेंट बोली बाहर करिवे तार ट्रुथ वैल्यू को आपन बाहर करियो पड़िबो ट्रुथ वैल्यू जेमती p और q बाहर करियार अछि p and q बाहर करियार अछि p और q माने p disjunction not p and not p माने p conjunction not p राइट तापर कंटीजेंट प्रोसेस रे बाहर करियार अछि एंड मु आपन मान को एठी किछि क्वेश्चन देइछि ए क्वेश्चन को आपण जत्ते प्रैक्टिस करिवे मे बी एथरु दुईटा रु तीनटा क्वेश्चन आपण मान पई आसी पारे लॉन्ग क्वेश्चन रे आपण ए ट्रुथ टेबल को जत्ते अधिक प्रैक्टिस करिवे आपण को पई भलो मु तार आंसर भी सब एठी सब करि देछि it's very easy for you guys and it's just the first one is you have to prove the implication function and this is also implication this is also implication and it's implication everything is implication and this is the equivalence bar करियर अछि आपन को पूरा proposition रो and this is the thing and this is the answer right and the last question is what is symbolic logic discuss the important characteristics of symbolic logic देखो तो आपन जेमति कहिथि कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हमको दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन मिलुची सब बेले गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को पढी कि देखिबे ता भीतर केतेटा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मिलुची केतेटा वन वर्ड आंसर मिलुची मे बी आपन को एई गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ने तीनटा वन वर्ड आंसर मिल पारे
दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन मिल पारे जेमति कि गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आदि व्हाट इज सिंबॉलिक लॉजिक एंड डिस्कस द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक दुईटा मिलला तो एठी अछि आपन को बहुत भलो भाबे डिस्क्राइब कराई छी आपन एटा देखि कि पढिबे एंड थैंक यू हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु मु आशा करूची हमर इंस्टीट्यूट हमर सार समस्त आशा करछन्ती आपण मानकर एग्जाम बहुत भलो हो भगवान कर आशीर्वाद आपण मानक ऊपर रहू गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट एवरीवन थैंक यू